Declaration of Value, which is DoV. Do I need to apply for DoV? Where should I apply for DoV? And what are the documents required for DoV? What are the duration? Where should I apply for DoV? There are lots of confusions and questions of students who usually not aware about this. So in this video, I will cover each and every concept about DoV, which is Declaration of Value. So if you didn't subscribe the video, so do subscribe and watch till end, because that is very important and beneficial video for you guys. Let you clear first what's usually mentioned in DoV, which is Declaration of Value. So here you can see this is DoV and it is completely in Italian language. Alright, so I will translate this Italian language into English and let you clear what usually DoV represent and what are the things that mentioned in your DoV, which usually tell about your educational background and qualification that everyone knows. So I will let you clear what usually write in your DoV. Here you can see Declaration of Value that I translated in English language. So statement of value on site, then we declare that the qualification in question in certified copy was obtained at here your university name, alright, then awarded here, next is applicant's name, born, your date of birth, then it, here will be mentioned your place, then citizenship, right, then passport number, released by Republic of India and the issuing authority is mentioned on the passport issuing date, valid until the expiry date of passport. Then the aforementioned qualification is valid for the purpose of enrollment according to the local school system in postgraduate courses at Indian universities. Admission to the course held at the aforementioned university is normally allowed after 12 years of schooling and passing the final exam of upper secondary school. So basically here is mentioned that you have completed your 12 years of schooling. Moreover, you have completed your graduation degree and you are applying for master studies course. So here is mentioned your academic qualification and educational background. Then it should be noted that the aforementioned qualification was obtained by the person concerned after 4 years of university studies or 16 years of schooling started from the first grade of primary school. So it is very clear, if you have completed your engineering, like usually engineering duration is 4 years, so if any student have done their engineering of 4 years, so in declaration of value 4 years will be mentioned. If in case if any student have done their bachelor studies in BCom or relevant field in 3 years, so here will be mentioned like 3 years of university studies. Moreover, 16 years of schooling, like 12 years of your high school, like first to 12, including 4 years of your graduation. So it is total 16 years. At the place of this, like if any student have done their Bachelor of Commerce BCom, so here we mention 3 years. So your entire high school like 12 years plus 3 years. So here will be mentioned 15 years of schooling started from the first grade of primary school. Then the educational qualification has an apostille in accordance with the Huge Convention 1961, thus appearing to be formally valid. So this is the laws, rules and regulations, and this declaration of value does not imply any recognition, equivalence or homologation of the qualification to which it refers, and a document of an exclusively informative nature aimed at providing with regard to the foreign qualification in question any useful element to allow the competent Italian authorities to evaluate the qualification for the purpose of its recognition in the Italian legal system pursuant to current legislation. Alright, so basically DoV represent your educational background, your educational qualification, your duration of total entire
years of schooling. All right, so it is very clear what usually DoV represents. So first question is, what is declaration of value? So the declaration of value is an official document which provides a short description of a certain academic qualification that we have seen awarded to a specific person by an institution belonging to an educational system other than the Italian one. All right. So basically DOV एक short description है आपके academic qualifications का एक specific person के लिए एक यूनिवर्सिटी ने अवार्ड किया है. All right. So basically आपकी DOV ये represent करती है. Moreover, the DOV usually includes the following information. तो DOV में बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है? सो फर्स्ट इज लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ द अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन. तो इसमें आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स होगी. देन रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम एंडिंग इन द क्वालिफिकेशन कंसर्न. द सेकंड थिंग इज रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम. ऑलराइट, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी के साइड से, कितना ड्यूरेशन है, लाइक इसमें मेंशन है लेंथ ऑफ द प्रोग्राम and or workload in hours credits. So length of program, like if you are pursuing or if you have done your engineering, so they will mention like 4 years of duration. If you have done your BCom, Bachelor of Commerce, so they will mention 3 years. Moreover, they will include like first primary to 12 years of education, first to 12, so it will around 16 years of education. Then the next thing is validity of qualification in the awarding country to academic end. So इसमें validity भी mention होगी. It is issued by Italian diplomatic authorities operating in the country or territory where you obtain your degree, printed on their headed paper, stamped and signed. So basically आपने जहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिस कंट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वहां की जो लोकल अथॉरिटी है, इटालियन डिप्लोमेटिक अथॉरिटी, वो ही आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इशू कराएगी. इस बात का आपको ध्यान देना है. तो हम देखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू अप्लाई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू? इफ यू हैव ग्रेजुएटेड इन इटली, यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड अ DOV. सो किसी ने इटली से ग्रेजुएशन किया है, so उनको ग्रेजुएशन में तो DOV उनको प्रोवाइड करने की नीड नहीं है. इफ यू हैव ग्रेजुएटेड इन एनी अदर कंट्री, you need to apply for declaration of value or statement of comparability, which is explained on the next coming video. All right. So जो भी इटली के अलावा दूसरी कंट्री से ग्रेजुएशन किया है, उनको ही डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कराना है. At the same time, or alternative, you can also provide statement of comparability at the place of DOV. So in the upcoming video, I will let you know how to provide statement of comparability. But declaration of value, okay. If you can opt for declaration of value, so you should apply for DOV only, not statement of comparability. The next thing is, when shall I start to apply for declaration of value? So duration क्या होगा apply करने का? To start this process, you need to have obtained your degree certificate. आपको डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट होगा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई करने के लिए. इस बात का हमेशा ध्यान देना है. Be aware that some consulate will require you to have obtained DOV before processing your study visa application. So इसका मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं. यूजुअली वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम ही आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई करना होता है, बट यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट होती है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू पहले प्रोवाइड कराना है. सो आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की नीड पहले होगी, आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू पहले इशू कराना होगा स्टडी वीजा अप्लाई करने से पहले. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको. ऑलराइट, we recommend that you start the process or procedure as soon as you confirm your participation in the master. It means if you received offer letter from the university or acceptance letter, so you can start preparing your declaration of value. Finally आपको declaration of value must होगा ही, राइट, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना होता है. जब आप इटली जाएंगे, उसकी जो हार्ड कॉपी होती है आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है. और यदि आप इटली, यदि आपका वीजा अंडर प्रोसेसिंग है और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की नीड है यूनिवर्सिटी की साइड से, तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की स्कैन कॉपी यूनिवर्सिटी को मेल करनी होती है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. द नेक्स्ट इज, वेयर एंड हाउ डू आई रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू? सो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मैं कहाँ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ से इश्यू करवा सकता हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के मन में.
सो मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहाँ से इश्यू करवाना है, कहाँ रिक्वेस्ट करना है. टू रिक्वेस्ट DOV, you have to contact the Italian embassy, consulate, or the Italian cultural institute responsible for the geographical area of the city where you have obtained your university degree. So usually Italian embassy और consulate ही आपको declaration of value issue करते हैं. एंड आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से हुआ है और वह यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है. लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड इफ यू बिलोंग टू MP, सो जो जोन होगा नियर बाय एम्बेसी का वो मुंबई जोन होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लिए. सो यू हैव टू अप्लाई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू टू मुंबई कॉन्सुलेट. इफ इन केस एनी स्टूडेंट बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली, so they have to apply for declaration of value to New Delhi consulate, right? So यदि आप अपनी नियर बाई इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में डिक्लेरेशन वैल्यू के लिए अप्लाई करते हैं, सो दैट वुड वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल, एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जल्दी भी प्रिपेयर होकर आ सकता है. इस बात का हमेशा ध्यान देना है. प्लीज नोट दैट यू विल हैव टू फॉलो देयर इंडिकेशंस टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. For instance, if you are from India but have graduated in the UK, you will have to contact the Italian authorities mentioned before in the UK. So इसमें बहुत ही क्लियर है. If you belong to India but you have graduated in UK, so आपको contact करना है nearby Italian authorities. Okay, in which university you have graduated from the UK. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई करें यदि आप यूके से ग्रेजुएट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप जहां से ग्रेजुएट हो वहां की नियर बाय इटालियन अथॉरिटीज में ही आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई करना होता है. राइट टू देम टू inquire about the documents you will need to prepare or provide about the process. If needed, make an appointment. So कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए, सो एक अपकमिंग वीडियो में बनाने वाला हूँ. डेफिनेटली उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इश्यू करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है. The next question, like what is the time frame for obtaining my DoV and what should I do if this is delayed? So basically processing time can vary from country to country. Yes, some consulate issue the DoV quickly within 2 weeks. In the worst case, it can take up to 2 months to prepare the documents required by the consulate before you can submit your DoV application. So minimum जो time frame है within 2 weeks के अंदर आपको declaration of value मिल सकता है. मैक्स टू मैक्स 2 months आपको लग सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू रिसीव होने में एंड प्रोसेसिंग में. इस बात का हमेशा ध्यान रखना. तो ऐसा नहीं है कि आपने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई किया एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू पे टाइम लग रहा है तो आपको बरी होना इस बात के लिए, ऐसा नहीं है. आप कोऑर्डिनेट करो कॉन्सुलेट के साथ कि मैंने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई किया है, प्लीज प्रोवाइड मी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एज सून एज पॉसिबल, राइट. देन वंस द इटालियन कॉन्सुलेट एक्सेप्ट्स योर DoV एप्लीकेशन, it can go again up to 2 months for them process it. If your DoV is delayed or if you are experiencing delays along the way, please promptly inform us by writing to the university. That means if you are, like it takes a long time, so you need to cooperate and communicate with Italian consulate as well. So everything will get resolved. The alternative document could be statement of comparability, which is explained on the upcoming video. Please note that some consulate embassies will require you have to obtain a DoV before processing your study visa application. In the case statement of comparability is not an option for you. Like इसमें ये बताया गया है कि इवन किसी DoV का अल्टरनेटिव ऑप्शन एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी होता है जिसमें आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है. सो समटाइम्स ये होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू में टाइम लग रहा है, सो आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आप इश्यू करवा सकते हैं. मैं बताऊंगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी कैसे इश्यू करवाना है, कहाँ से बनेगा, क्या प्रोसेस होती है. सो विल सी इन अपकमिंग वीडियो. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शैल आई डू व्हेन आई ऑब्टेन माय डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू. तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको मिल गया, अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस, मुझे क्या करना होगा. सो व्हेन यू ऑब्टेन योर DoV, make sure you keep the documents as it is has been delivered to you. Do not remove any stapled documents. Please send a scanned copy. Make sure you keep it stapled. University, as soon as you have it on hand, you will also need to provide the original DoV and all the original documents attached to it upon the start of the master. The originals will be returned to you when the enrollment is finalized. So basically जब आपको DoV इश्यू हो जाता है, जब DoV आपके हाथ में होता है, सो नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि DoV यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आप उसको एज सुन एज पॉसिबल इस यूनिवर्सिटी का आपको DoV प्रोवाइड करना होता है.
समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटी डीओवी की रिक्वायरमेंट बहुत ही जल्दी रखती है, लाइक they will ask you to provide DoV, so you have to just scan it and just you need to email to the university, or else if you will fly to Italy, so you have to submit the DoV, its original copy, to the university international office. All right, after your enrollment is finalized, they will return the originals definitely. So आपको इस बात का ध्यान रखना है कि DoV आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है, एंड यूनिवर्सिटी यदि आपको DoV पहले रिक्वायरमेंट यदि है DoV की यूनिवर्सिटी के साइड से, तो आपको स्कैन करके यूनिवर्सिटी को मेल करना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज how should you apply for DoV and what are the documents required for DoV. So in the upcoming video, I will let you know about whole process, how to apply, what are the documents required. Thank you. I hope you liked the video. If you like, so do subscribe and press the bell icon for upcoming videos. In the next video, I will tell you what are the documents required for declaration of value and how to apply. So thank you so much.